In the previous videos, we have seen the three basic of classification. Number one, presence or absence of notochord. Number second, level of organization. And number third, body symmetry. Now in this video, we are going to discuss the fourth basic of classification. And कौन सा? The fourth basic of classification is diploblastic and triploblastic organization of an animals. So first, what is diploblastic organism? And second, what is triploblastic organism? तो क्या है? The organism in which cells are arranged. Cells are arranged into two embryonic layer. Two embryonic layers. Embryonic layers are also called as germinal layers. कौन से दो embryonic layers? Outer is ectoderm and inner is mesoderm. Sorry, inner is endoderm. Such organisms are called as diploblastic organisms. तो कौन से ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं? सिंपल कि द ऑर्गेनिज्म इन विच cells are arranged in two embryonic layers. Embryonic layer is also called as germinal layers. कौन से? Outer is ectoderm and inner is endoderm. Before that, मैं आपको एक important information यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि this is male gamete and this is female gamete. Male gamete and female gamete. These fuse to develop the product, and that is zygote. And this process, कौन सी? The fusion of male gamete with female gamete to develop the zygote, that is the immediate product of fertilization, is zygote. And पूरे process को हम कहते हैं fertilization. Then zygote undergoes mitotic cell division, develops the many cells, and this is known as morula. Morula further divides and develop it into the many more layers of the cells, and this is known as gastrula. And this gastrula develops the embryonic layer 1, 2, and 3. And these develop the embryonic layer, and outer is ecto, middle is meso, and inner is endo. These are the three germinal layers or embryonic layer, right? And these embryonic layers का काम क्या होता है? उनका फंक्शन क्या होता है? The function of the germinal layer is to develop. किसको डेवलप करना? To develop organ and organ system. Organ and organ system को डेवलप करना in the fetus में. To develop the organ and organ system in fetus, ये काम होता है germinal layers का. So how germinal layers कैसे डेवलप होते हैं? These are embryonic layer और germinal. Clear? Now, किसको हमने डिप्लोब्लास्टिक कहा है? The organism in which cells are arranged in two embryonic layers or germinal layers. कौन से? Outer is ectoderm and inner is endoderm. Such organization is diploblastic. Example कौन से हैं? Example is coelentrates and ctenophora. Coelentrate and ctenophora. The member of coelentrate and the member of ctenophora are diploblastic organization or diploblastic animals.
जस्ट डायग्राम करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज, this layer is inner layer एंड इनर लेयर में हमने कहा है, इनर लेयर को यहां से लेबल करते हैं, दिस इज inner layer and inner layer is endoderm, क्लियर। उसके बाद में एक वन मोर लेयर है एंड देन द आउटर लेयर, एंड आउटर लेयर इज, आउटर लेयर को क्या कहा है, आउटर लेयर वी लेबल्ड इट एज द ectoderm, inner is endoderm, outer is ectoderm, right, this is ectoderm। इस टाइप का अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली टू जर्माइनल लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, सच ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल कौन से, एग्जांपल्स द मेंबर ऑफ सिलेंट्रेट्स एंड मेंबर्स ऑफ टेनोफोरा आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। आउटर, इनर, एंडो, आउटर, एक्टो। देन व्हाट अबाउट मेसोडर्म, in diploblastic mesoderm, in diploblastic organisms, instead of mesoderm, instead क्या लिखा देखो, instead of mesoderm, mesoderm नहीं होता, only two layers होते हैं, instead of mesoderm there is a presence of, क्या presence है, mesoderm की जगह क्या है, mesoderm की जगह undifferentiated, undifferentiated layer of, undifferentiated layer of mesoglia cell, mesoglia cell, and that is the important characteristics of diploblastic organisms। कौन सी, यहाँ पे ये एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, यहाँ पे मेसोडर्म होना चाहिए, थर्ड जर्माइनल लेयर्स, एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड जर्माइनल लेयर, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट यहां पर मैंने क्या कहा, इन डिप्लोब्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मेसोग्लिया सेल। यहां पर अनडिफरेंशिएटेड, जो डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, मेसोडर्म में डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, एंड दीज, उसे क्या कहा है, दीज वी कॉल्ड इट एज मेसोग्लिया सेल। So mesoglia cell is present in between the endoderm and ectoderm, and वही है important characteristics of diploblastic organisms, right? So this is all about diploblastic organisms. Now second one is triploblastic organization। मैं ये मिटा देता हूं इसको। Now we'll see triploblastic। जैसे हमने डिप्लोब्लास्टिक को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, उसी तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इन विच सेल्स आर अरेंज्ड, cells are arranged into how many, into three germinal layers or three embryonic layers। कौन से, वेरी क्लियर, आउटर क्या कहेंगे, एक्टो, मिडल क्या कहेंगे, मीजो, एंड इनर क्या कहेंगे, एंडो। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इन विच the cells are arranged into three germinal layers, outer ecto, middle meso, and inner endoderm. Such type of organization is known as
क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर इसी को हम दूसरे लाइन में कहेंगे तो कह सकते हैं कि इन सम ऑर्गेनिजम्स द थर्ड जर्माइनल लेयर इज प्रेजेंट। कौन सी? मिजोडर्म। कहां पर? इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे जो है डिप्लोब्लास्टिक में क्या है? मिजोडर्म नहीं है। मिजोडर्म की जगह क्या है? अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मिजोग्लिया सेल। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिजोडर्म। मैं यहाँ पे थर्ड मिडल लेयर निकाल रहा हूं, इन बिटवीन एंडो एंड एक्टो, एंड दैट लेयर कौन सी है? ये वाली, एंड दैट इज मिजोडर्म। such type of organisms may have, तो that organisms is known as triploblastic organisms. Now last, ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा है डिप्लोब्लास्टिक में कौन से एग्जाम्पल है? सिलेंड्रेट्स एंड टेनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन से एग्जाम्पल्स है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस, two chordates. Platyhelminthes two chordates have triploblastic level of triploblastic organization. Right. So very clear. That is the fourth basic, जिसको कंसिडर करके ऑर्गेनिजम्स टू कैटेगरी में डिवाइड हुए। नंबर वन डिप्लोब्लास्टिक, नंबर टू ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या डिफर है? ओनली सिंपल, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स। दो कौन से? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। थ्री कौन से? मिजोडर्म, थर्ड जर्माइनल लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। राइट। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मिजोडर्म देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मिजोग्लिया सेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स possess triploblastic nature of organization. So here the fourth. In the next video we'll discuss the fifth basic, and that is silo.